This is one of my favorite question, and let's see what is this particular question. So a satellite is moving around Earth. So satellite is moving around Earth and some parameters are given. So what are these parameters? So these parameters are, the first parameter is given that G, that is obviously, do you know value of G, that is gravitation constant, ms into me, this is mass of satellite, this is mass of Earth, is nothing 8 into 10 to the power 17 joule meter. So this is one parameter is given, and that is mainly the value of k is given. And obviously if we are satellite Earth problem, then we are in the Kepler's problem. Okay, and it is given that altitude at perigee, altitude at perigee. What is perigee? That is minimum distance. And what is altitude? From the distance from the surface of Earth. This is altitude. So read question very carefully. And this question was asked in your exam, in your IT JAM exam in last year actually. And we are very fortunate that we have solved this question in the class. Only they have just changed the parameter, but the story is exactly same. So what is this question? This is very interesting. Altitude at perigee, perigee means minimum distance, that is 1100 kilometer. Okay, so everything is under the screen. Okay, good. And second thing is altitude of apogee. What is apogee? That is maximum distance. That is altitude. Altitude means distance from the surface of Earth, and that is all about 4100 kilometer. And radius of Earth is also given. Radius of Earth is given, and that is obviously we know that is 6400 kilometers. So everything is given in kilometer, but this is given in joule meter. So you have to always keep your dimension in a very intact way. So you have to change everything into meter form. Okay, that is different issue. Now my question is that this satellite is moving in a elliptical orbit with this much of parameters. So how these parameters can be represented symmetrically, can be represented as a figure. I am just giving you 20 seconds, just draw the figure. एक बार draw करो figure, फिर आप देखना क्या आपने गलती की है. Because it is very important that you understand from your mistake. And look at this parameter very carefully. Okay, just try to see this parameter very carefully. Just try to go for this. ओके, हो गया. कितने लोगों ने कुछ ऐसा ड्रॉ किया है? कुछ लोगों ने ऐसा भी ड्रॉ किया होगा. ये डायग्राम सही है या गलत है? Just tell me. Make this class interactive. This is problem session, okay? गलत है. गलत है. क्यों गलत है? अर्थ को कंसीडर ही नहीं किया. अर्थ को कंसीडर, अर्थ को यहाँ पॉइंट मास ले लिया गया है, isn't it? एंड यहाँ पर मान लो सैटेलाइट घूम रहा है. अर्थ इज अ पॉइंट मास, सो दिस फिगर इज रॉन्ग. सो यू हैव टू सी पैरामीटर. आपके पैरामीटर में सबसे बड़ा नंबर तो अर्थ का रेडियस ही है, और आप उस रेडियस को ही मिस कर जा रहे हो. सो यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर वेरी केयरफुली. आपको इस फिगर को बहुत ही ज्यादा केयरफुली ड्रॉ करना होगा. और कैसे आप ड्रॉ करोगे? जस्ट गो फॉर इट. सो वी हैव दिस as my surface of Earth. This is my Earth. So you can have this value as 6400. And now let us assume this is my perigee. So it will be very, very smaller than, not very smaller. This will be on ratio wise. This will be smaller.
and that is your 1100, and again this is your 6400, and this will be your something like 4100. So this must be greater than this. So this will be my schematic diagram, and here anywhere you can have Earth, and yes, this is your center of Earth, and this will be 4100. So look at this picture very carefully, and you have to understand the ratio between this number very carefully. Now, the question was very interesting. The first question is that find the eccentricity. Second question is that find the measure axis. Second is find the eccentricity. Third is find the energy in a satellite, in a orbit, energy of satellite in a orbit. And fourth is how much energy you needed such that you will fix the satellite in orbit. So this will be delta W. How much work done you have to do such that you will fix the satellite from surface of Earth to this particular orbit. And fifth question, I am just giving you homework that find the angular momentum. So this will be your homework. Okay. Now, why I have chosen this particular problem? This is very important. Look at, if you know the parameter of ellipse, if you know the parameter of ellipse, then you can find each and every physical quantity which is important and which can give the qualitative or quantitative analysis of satellite in orbit or planet in orbit. So this is just a geometrical number, and how you can see how this can be transformed into different types of all parameters. Okay, energy, work done, angular momentum, everything you can calculate. So now let's try to calculate your measure axis. So what will be your 2a? So your 2a is equal to 4100 plus 6400 plus 6400 plus 1100. So what will be this number? Just calculate it. I think 180,000 kilometer. Yes? हो रहा है? Just check करो, calculate करो. Okay. Now let us try to calculate eccentricity. How you will calculate the eccentricity? You have R minimum. What is your R minimum? बताओ R minimum क्या होगा? Please interact. Otherwise कोई मतलब नहीं है क्लास का. What will be R minimum? 6400 plus 1100. 6400 plus 1100. Okay. What will be R maximum? 4100. 400 plus 4100. Isn't it? This is R minimum and this is your R maximum. And this R minimum is equivalent to A 1 minus E. Yes. In last class we have discussed this thing. And this R maximum is equivalent to A 1 plus E. And if you are going to divide this particular thing, then what you will get? You will get R minimum by R maximum is equal to 1 minus E, 1 plus E. And from here, you can easily calculate that E is equal to R minimum. Sorry, E is equal to, you can just calculate it and you will get R maximum minus R minimum by R maximum plus R minimum. And you will get this value is 1 by 6. Just you can check this number. मैंने तो कई बार कर रखा है. So I have all this data. I know this data after solving it. But you have to solve it. है ना? आपको solve करना चाहिए. So go do practice with yourself. Everyone is comfortable? यहाँ तक clear है? Yes, sir. Everyone? ठीक. चलो, सौरभ के अलावा और कोई स्टूडेंट बताएगा. ठीक है ना? चलो, रूपाली यहाँ पर है क्या? Yes, sir. चलो रूपाली, वेरी गुड. चलो बताओ,
E कैसे निकलेगा? How you will calculate E? So minus k upon 2a. Very good. Minus k upon 2a. So minus k upon 2a. K की वैल्यू क्या पुट करोगे रूपाली? 8 into 10 raised to power 7. Very good. 8 into 10 to the power 17 joule meter. And what will be value of 2a? 18,000. बस सही है, सोच लो। सही होने पर चॉकलेट है और गलत होने पर मार्क्स कटेंगे। वर्जन करना है इसका अभी। यस, आपको यहां पर एक ध्यान देना होगा कि इसके साथ साथ आपको क्या लेकर आना पड़ेगा? 10 to the power क्यूब b। जरा फटाफट कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। जस्ट गिव मी फाइनल आंसर। एवरीवन कैलकुलेट करो। आ रहा है क्या जूल की तरह, इस तरह कुछ ऐसा आ रहा है क्या? यस सर, यही आ रहा है। आ रहा है ना? -4.4 समथिंग आ रहा होगा, बट मैंने उसे अप्रोक्सीमेट 5 किया है। ठीक है, सो 8/18 को आप ले जा सकते हो और इसको ऊपर ले जाओ तो इस तरह देख सकते हैं। 80/18 करके आप देख सकते हो, है ना? एनीवे, सो यहां पर एक बेसिक मिस्टेक क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन आपको नेट के एग्जाम में आ गया तो बेसिक मिस्टेक ये होगा कि आप इस नंबर को छोड़ दोगे। अब बहुत बच्चों ने किया है ऐसा। ठीक है, जैम के एग्जाम में क्या आया था? जैम के एग्जाम में ये पैरामीटर दे दिया था एंड दे हैव जस्ट आस्क व्हाट विल बी मेजर एक्सिस। सिंपल, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप जाकर देख सकते थे। ओके, नाउ क्या ये एनर्जी इस पूरे ऑर्बिट में फिक्स है, सेम है या डिफरेंट है? रूपाली, सौरभ के अलावा कोई तीसरा? देवव्रत है? देवव्रत बताओ इफ यू आर देयर। कुछ कुछ बच्चों के नाम तो मुझे याद हो रहे हैं, या एब्सेंट हो? सर चेंज होता रहेगा। हाँ सर चेंज होता रहेगा। चेंज होता रहेगा एनर्जी? माय गुडनेस, मैंने तो बस मजाक में पूछ लिया था। चेंज कैसे होता रहेगा भाई? पूरा का इस ऑर्बिट में एनर्जी चेंज होती रहेगी? नो सर, फिक्स होगी सर। एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी कब चेंज करोगे? जब तुम्हें इस ऑर्बिट से कोई नई ऑर्बिट में जानी होगी, है ना? यस। सपोज, अब आपका देखो, इसको समझने की कोशिश करो क्या कहानी हो रही है। सपोज ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा ऐसा ही तो होगा इफेक्टिव पोटेंशियल। और इफ यू आर टेकिंग दिस मच ऑफ एनर्जी, so this is your R minimum and this is your R maximum. Are you getting my point? This is basically one-dimensional representation of V effective, but actual thing is this one. So you have to remember this one. So your energy is fixed here because you are just using the conservative force, and hence, and here you can see the energy is not an explicit function of time, so it will be always conserved. Okay, good. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये मैं डेल्टा W के लिए पूछ रहा हूं। हाउ मच वर्क डन यू विल डू सच दैट योर सैटेलाइट विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर? इज दैट नंदना इज हियर? Yes, sir. Yes, Nandana. Now you can tell me which type of concept you will use. देखो मुझे बच्चों के नाम याद हो जाते हैं, मैं एक बार देखता हूं तो, है ना? सो एक दो दिन के अंदर मैं सारे बच्चों के नाम याद कर लूंगा, डोंट वरी। Can play the concept of change in energy. Yes, so what should be the concept? Very good. On the surface minus gmm by r is the energy. Very good. So you will use the work energy theorem, isn't it? Delta W is equal to, here is your final energy and here is your initial energy, and you can have your satellite in Sriharikota, don't worry. Okay, in a south very good place, Sriharikota, you have this particular satellite and you just want to put it here. Now my question is that if you are putting the satellite from here to here, or you are putting the satellite from here to here, is that any difference in a work done? Question is very insightful, please. If I am putting my satellite from Sriharikota to this altitude, or from Sriharikota to this particular altitude, is that delta W is will different?
No, sir. No. Why not? Because of conservative nature of Exactly, because of conservative nature of force. So that will not dependent on path. That will dependent on initial point as well as final point. They will just act like as a potential, isn't it? So what will be your EF? EF तो हमने निकाल लिया है, final point minus EI. चलो सौरभ, what will be EI? क्या होगा? EI क्या होगा? E equal to minus K upon नहीं EI की वैल्यू minus GMM So upon minus K upon radius of Earth. Radius of Basically, Earth. your satellite is also interacting with Earth here, है ना? And this is your distance. Please mind it. yes This sir. is your distance. When I am standing on the surface of Earth, there are some force, and that force is the between that center of from the center of Earth to my center of mass, actually, isn't it? And now Yes sir. you can just write this particular form. फटाफट कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है. माइनस के की वैल्यू क्या पुट करें? माइनस 8 into 10 to the power 17. R is again 6400, and don't miss it, 10 to the power 3. Are you people comfortable? Yes, sir. Very good. क्या आ रहा है कैलकुलेशन? फटाफट कैलकुलेट करो. 1.25 into 10 raised to power 11. So that is 12.5 minus या plus? Minus. Minus. Very good. So 12 into 5 into 10 to the power 10. Am I correct? Yes, sir. Yes. So what will be my energy? My energy is basically EF is minus 4.5 into 10 to the power 10 minus we have minus 12.5 into 10 to the power 10, and that value is positive 8 into 10 to the power 10. Now what is meaning of positive energy? Change work done is positive. What is meaning of that? Anyone? That this energy will be required. That energy will be required, and you have, okay, that is okay, but you have to do work done on the system. Okay, Yes, sir. when it will give you negative energy, then work done by the system, isn't it? Yes, sir. Okay, so now this is a wonderful question, and this question is in Kleppner, a very nice book of mechanics. So this is in the Kleppner. Now let's come to the fifth question, and this is very interesting. You have to calculate J. कैसे calculate करोगे J? E equal to under root 1 plus 2 is वेरी equal गुड. to आप 1 plus- एसेंटिसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना? एनर्जी वाले Yes, में sir. आर मिनिमम रख दो तो आर डॉट की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. वहां से कैलकुलेट कर सकते हो. सो आप दोनों तरीके से कैलकुलेट करो एंड जस्ट गिव मी E is equal to 1 plus 2E J square upon MK square. You know E, you know M, you know K. Put M is equal to 200 kg. Oh, sorry, 2000 kg. M की भी जरूरत पड़ेगी. सो टेक दिस नंबर. यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो. E is equal to J square 2M. You can take R minimum or R maximum, anything, minus K upon R minimum. अगर R maximum लेना होगा तो भी ले सकते हो. And E is fixed, K is fixed, and you can write the value of J. R minimum से भी निकालो, R maximum से भी निकालो, and you have to always give the exact answer. तीनों से आपको same answer मिलना चाहिए. So I wish that आप लोग ये सारे प्रॉब्लम करोगे एज अ होमवर्क. तीनों तरीके से निकालोगे, है ना? करोगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. very good. चलो. So if you have any doubt from this particular problem, you can just raise this question. देखो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप एक प्रॉब्लम को स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करो. If you are not trying to understand problem as a story, then it is very difficult. So स्टोरी में एक एक जो पैरामीटर्स है एक एक कैरेक्टर की तरह है, और आपको देखो वो कैरेक्टर क्या काम कर रहा है, isn't it?
और फिर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ कैसे अटैच्ड है, किस तरह से बातें हो रही है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, गुड. एनी डाउट? सर हम मास सैटेलाइट का ले रहे हैं ना? हाँ, ऑब्वियसली यू हैव टू टेक दिस मास ऑफ द सैटेलाइट. यस. तुम्हें क्यों ये कंफ्यूजन हुआ? सर पता नहीं, ऐसे एकदम से दिमाग में आया. ये मास किसका मास है? सर अर्थ का. अर्थ का लेते थे कब? जब अर्थ सन के अबाउट रोटेट करता था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. यहां पर अभी कौन रोटेट कर रहा है? सैटेलाइट. सैटेलाइट. सो यू कैन यूज इट. यहां जो सन का काम है वो कौन कर रहा है? अर्थ कर रही है. अर्थ कर रहा है ना? सो इसलिए मैं बोलता हूं कि हर चीज को समझने की कोशिश करो पहले. ओके, देन आफ्टर देन हार्ड वर्क इज नेक्स्ट लेवल. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, वेरी गुड. सो इस तरह से आपको हमेशा ये बात करनी चाहिए, दिस मास m इज नथिंग बट द मास ऑफ अ पार्टिकल विच इज रिवॉल्विंग अबाउट द सम्स पॉइंट. ठीक है? ओके, चलो यहां तक क्लियर है ना? Okay, let's try to go for a next problem. So इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी वंडरफुल प्रॉब्लम. ठीक है? और अच्छे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपको हमेशा करने चाहिए. एटलीस्ट उसके एग्जाम्पल्स तो जरूर ही लगा लो, है ना? बिकॉज जो भी फॉरेन राइटर्स के अच्छे बुक होते हैं, मेनली फॉरेन राइटर्स बुक, अनफॉर्चुनेटली वेरी फ्यू बुक इन बाय द आवर कंट्री इज वेरी फेमस, बट मेनली इन फिजिक्स. सो आप अगर देखोगे किसी भी अच्छे बुक, क्लेपनर है या फिर गोल्डस्टीन है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें जहां तक हो सके उसको सॉल्व करने. हालांकि मैक्सिमम मैं सोर्स वहीं से लेता हूं, सो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम. आपको मैक्सिमम चीजें वहां की मिल जाती, बट फिर भी आप जरूर ट्राई करो एटलीस्ट एक दिन में एक क्वेश्चन जो किसी भी एक अच्छी बुक का है उसे लगाने की कोशिश करना. इससे फिर क्या होगा, एग्जाम में आपको जब नए क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप देख करके उसे हराओगे नहीं. ओके, भले ही वो सॉल्व नहीं हो, दैट इज डिफरेंट इशू. आप मुझे भेजो, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने का, अगर सॉल्व हो जाता है तो, है ना? बट आपको एक बार पढ़ना, पढ़ करके देखना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. सो इंट्यूशन डेवलप होता है उस तरह के प्रॉब्लम से. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आई थिंक एमआईटी के एग्जाम में, पहले एमआईटी के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन की तरह होता था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है. वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी इंसाइटफुल क्वेश्चन. एमआईटी, यूएस वाली एमआईटी, है ना? देखो क्या कह रहा है और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. एंड यू कैन सी दैट इन द होल कॉन्सेप्ट वी यूज जे एज अ पैरामीटर. जे को हम नहीं छेड़ते हैं, है ना? एनर्जी को चेंज कर लेते हैं, आर मिनिमम आर मैक्सिमम को चेंज, आप आर को चेंज कर लेते हो, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाता है, बट जे हमेशा हम फिक्स करके रखते हैं. एंड नाउ how you are fixing this J will tell you this story. Okay, let's go for this one. This is wonderful, excellent. So भाई आप एटॉमिक मॉडल तो देखे ही हो, है ना? एटॉमिक मॉडल में क्या होता है, एक चार्ज सेंटर में होता है, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज उसके चारों तरफ घूमते रहती है. सो हम लोगों को पता है. सो दिस इज योर प्लस ई चार्ज एंड दिस विल बी योर माइनस ई चार्ज. And we take the circular atomic model and the radius is something r naught. This is given. Only this thing is given. And now again आप देख रहे हो एक पैरामीटर दिया हुआ है और दूसरा पैरामीटर हम जैसे ही चेंज करते हैं, यहां क्या क्या पैरामीटर दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है दोनों पार्टिकल का, मतलब पोटेंशियल का फॉर्म दिया हुआ है ना? व्हाट इज योर पोटेंशियल राइट नाउ? क्या होगा? माइनस ई प्लस ई इंटू माइनस ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट. यही होगा ना? भाई आर कर देते हैं और इस केस में वी आर नॉट की वैल्यू
माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। यही तो होगा पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ट्रिवियल है। व्हाट इज, व्हाई इट इज ट्रिवियल? दे आर जस्ट आस्किंग यू व्हाट इज एनर्जी ऑफ अ this charge particle, negative charge particle whose mass is also let's say m, but m का कोई खास रोल नहीं रहेगा। So in what will be energy in a circular orbit? Energy in circular orbit, this is very interesting. So this is energy in circular orbit. And second, now story go into next level. What is going to happen? Suddenly what will happen? This charge will change to प्लस 2e। ये चार्ज है वो किस में चेंज हो जा रहा है? प्लस 2e में चेंज हो रहा है। कुछ ऐसा घटना हो रहा है, देयर आर सम एक्सपेरिमेंट गोइंग ऑन, और सम मे बी सम नेचुरल प्रोसेस कैन बी हैपन दैट दिस चार्ज, center charge is going to 2e. And when this charge is going to 2e, it is so fast at the time of that particular change, this energy doesn't recognize the thing, what is going to happen at the center. But after some time, it recognizes that, okay, something is going to happen at the nucleus and it will find itself into new orbit. Something magical, isn't it? उसको लगता है कि यार कुछ तो वहां हुआ है और अपने आप को वो एक नया ऑर्बिट में देख रहा है। And that orbit, then you have to find what will be energy in new orbit. What will be energy in new orbit when charge of center is going to change. Plus 2e. And if it is into new orbit, then you have to find what will be R minimum and what will be R maximum. Again, you will see, we will revise whole theory in this particular problem. पूरे problem में इस पूरी की पूरी theory को हम revise कर पाएंगे। Everybody understand the thing? और ये मत सोचो कि ये 2 क्वेश्चन है या 1 क्वेश्चन है। We are revising the whole concept of central force. Okay, let's go for first one. First one is very trivial, very simple. What is this one? So what is energy? Your energy is equal to E is equal to obviously half m r dot square plus j square upon 2m r square minus e square upon 4 pi epsilon naught r. What will happen at r is equal to r naught? What will happen at r is equal to r naught? R dot is equal to Exactly, r dot is equal to 0. So I have energy. Let's say this energy is E naught and this value is j square plus 2m r naught square minus e square by 4 pi epsilon naught r naught. Now, is that this one is your answer? क्या ये आपका आंसर है? बताओ क्या ये आंसर है? Anyone? देखो जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आपको इंटरेक्टिव होना पड़ेगा तभी सीख पाओगे, है ना? Is that I can write this one is my answer? Yes, sir. Yes. No, Why not? J square को Yes, we don't know what is value of j square. Because आपको आंसर किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? You have to write your answer in a term of given parameters. Are you people happy? Yes, sir. हाँ, तो अब हमारा चैलेंज क्या है? We have to write j square in term of given parameter. और हमने यहाँ सर्कल का कोई तो प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है।
Yes. So what will be that property? So you have to just go for circle का property क्या होगा बताओ? Del V effective upon del R is equal to 0 at R is equal to R naught. And what is your V effective? Your V effective is equal to J square upon 2m R square minus K upon R. And here is E square by 4 pi epsilon naught R. And here you have to use the circular, the concept of circular orbit. That means the centripetal force is equal to external force with the negative sign. Isn't it? Hoga na? And from here I can get value of the J square. मिल जाएगा कि नहीं? And what will be value of J square? Negative sign is cancel out. So you can write M E square and 4 pi epsilon naught R naught. है ना? यही तो होगा value of J square. ठीक लिखा हूं? क्या कुछ गड़बड़ है? Check it. Okay. And now you can put this particular value here. And when you are going to put this particular value, then let's see what is going to happen. E naught is equal to, I can put M E square R naught 4 pi epsilon naught by R naught square minus E square 4 pi epsilon naught R naught square by 2m भी होगा ना. So I think your answer will be minus E square by 8 pi epsilon naught R naught. आ रहा है क्या? Just check it. I think this will be answer. Yes, sir. है ना? 8 है, 4 है, तो 8 आएगा. And this is very popular answer also. This one is very popular answer. आप जब हाइड्रोजन एटम सॉल्व करते होगे वो सारा देखते होगे तो एवरीवेयर यू विल गेट दिस टाइप ऑफ आंसर, मेनली इन अ क्लासिकल मेथड. नाउ सो दिस इज द स्टोरी ऑफ फर्स्ट पार्ट. लेट्स ट्राई टू गो फॉर अ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है वो जरा देखते हैं. नाउ इज दैट दिस प्रोसेस इज फास्ट प्रोसेस और स्लो प्रोसेस? जो चेंज हो रहा है आपका सेंटर पर, जो चार्ज चेंज हो रहा है वो फास्ट प्रोसेस है या स्लो प्रोसेस है? Fast process. Very good. So in a fast process, wherever you will do in a fast process, that is, then what will happen? The state of a system is not going to change. The state of a system is not going to change. So now, what is classical state of a system? क्या होगा classical state? You have classical state, you have quantum mechanical state, you can have all this thermodynamical state. So what will happen to the state of a system? Position and momentum. Obviously, position and momentum are the state of a system, and which is not going to change. That means I can say that angular momentum will also not going to change. Isn't it? Obviously, angular momentum is constant in one orbit. Energy is also constant. But when you are doing the fast process, something you are doing very fast, you will surprise that energy will change due to some other reason, not due to change of state. But here you will see that angular momentum is not going to change, but energy is going to change. Now just tell me why angular momentum is not going to change and why energy is going to change.
एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन एनर्जी चेंज हो रहा है। कारण क्या है? सर ऑर्बिट चेंज हो रहा है इसलिए ऑब्वियसली energy change ऑर्बिट तो होगा। इसके कारण ही चेंज हो रहा है, क्योंकि एनर्जी चेंज हो रहा है। बट इस पूरे फिगर में ऐसा क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है? नाउ मैं आपको दूसरे ढंग से पूछता हूं, फिर से आते हैं। अब नई एनर्जी ई है, दिस इज योर न्यू एनर्जी, एंड दिस विल बी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर plus j square upon 2 mr square. And what will be now potential energy? What will your potential energy? बताइए। 2e square by Very good. That will be minus 2e square upon 4 pi epsilon naught r. So इसमें और इसमें क्या चेंज कर रहा है? दोनों में क्या चेंज हुआ है? पोटेंशियल का वैल्यू पोटेंशियल का वैल्यू क्यों चेंज हुआ है? चार्ज के चेंज होने से, चेंज। ना ही पोजीशन के चेंज होने से, ना ही वेलोसिटी के चेंज होने से। Isn't it? So your angular momentum will remain conserved, but your total energy is going to change. Why? Because your charge is going to change. Are you people agreed at this particular point? Sir, can we say that there is no external torque? Obviously, there is not external torque. There is not external torque because it is central force problem. इसमें तो ये तो day 1 की बात है। Due to this, angular momentum remain constant. भाई एंगुलर मोमेंटम तो कभी भी नहीं चेंज होगा। आई कैन से दैट, वो तो जब भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा चेंज। Yes. इसमें कौन सी बड़ी बात तुम कह रहे हो? बात यह है कि ये प्रोसेस फास्ट था, इस कारण ऐसा हो पाया। आर यू गेटिंग माय? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं फास्ट प्रोसेस का। गैस का एग्जांपल आप ले सकते हो, आइडियल गैस। सपोज ये गैस है, ये हमारा पिस्टन है। अब इस पिस्टन को आप बहुत फास्टली खींचोगे। सपोज इस पिस्टन को आपने फास्टली खींचा, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इसकी प्रेशर और वॉल्यूम क्या चेंज होगी? No, sir. नहीं चेंज होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? बिकॉज दिस प्रोसेस इज फास्ट प्रोसेस, और प्रोसेस फास्ट प्रोसेस होने के कारण स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज नॉट गोइंग टू चेंज। एंड व्हाट इज योर थर्मोडायनेमिकल स्टेट? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो क्या होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? आपका पिस्टन तो यहां आ जाएगा, बट गैसेस मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन दिस गैसेस रियलाइज क्योंकि देयर इज एनफ स्पेस, लेट्स डिफ्यूज इट। सो डेंसिटी चेंज होने के कारण वो डिफ्यूज करेगा, और इसको आप फ्री एक्सपेंशन कहते हो। यस, Yes. है ना? सो दिस इज समथिंग लाइक फ्री एक्सपेंशन। बट एनर्जी इसलिए चेंज हो जा रहा है क्योंकि आफ्टर सम टाइम you are just saying that this charge is going to change. So let us try to calculate the value of energy. So how you will calculate the value of energy? At that particular point of time, R की वैल्यू क्या होगी? R नॉट ही रहेगी। R डॉट की वैल्यू क्या होगी? 0 रहेगी। जिस समय जस्ट वो चेंज हो रहा है, जस्ट वो चेंज हो रहा है आफ्टर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ई। फटाफट निकाल के देख सकते हैं क्या आएगा वैल्यू? सर बोलो। सर ये R0 इन दोनों की डिस्टेंस है ना? हाँ, R0 दोनों के बीच का डिस्टेंस। सर वो चेंज नहीं होगा? होएगा चेंज और भी थोड़ा देर change बाद, थोड़ा देर बाद। एट उस पर्टिकुलर टाइम पे मोमेंट सोचो जिस समय उस रिएक्शन हुआ है, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। ठीक है? ओके सर। ओके। ओके, सो
let us try to go for this particular energy. So this energy, new energy is equal to, again this will be 0 at that particular moment. And मैं इस moment पर बात कर रहा हूं जब t is equal to t हो रहा है, जिस समय सारा खेल at this point पर हो रहा है. Okay, and this will be 2m r naught square minus 2e square 4 pi epsilon naught r naught. You can put value of j square, put कर सकते हो, and that will be remain constant. So you will put it here and you will get something m e square r naught by 2m 4 pi epsilon naught r naught square minus 2e square 4 pi epsilon naught r naught. क्या वैल्यू आ रहा है? That is 3 -3 e by 4. square minus sin 8 pi epsilon naught r naught, है ना? यस या नो? Yes, sir. और ये जब एनर्जी उसे मिलेगा, जैसे ही उसको पता चला कि मेरी एनर्जी ये हो गई है, तो क्या वहीं पर रहेगा वो? अब समझने की कोशिश करो, पहले कहां था पार्टिकल? योर पार्टिकल विल बी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. यस, और उस समय एनर्जी इसकी कितनी थी? ई नॉट. अभी इसकी एनर्जी कितनी है? 3 टाइम ई नॉट. अब जैसे ही इसको नई एनर्जी और नेगेटिव साइन है, सो ऑब्वियसली अब न्यू ऑर्बिट होगा. दैट न्यू ऑर्बिट इज व्हाट? क्या मिलेगा उसे? सर्कुलर से इलिप्स हो जाएगा. हाँ, सर्कल से इलिप्स हो इलिप्स जाएगा. हो जाएगा. दैट विल बी चेंज फ्रॉम सर्कुलर टू इलिप्स. इलिप्स. अब जैसे ही इलिप्स होगा तो ऑब्वियसली आप आर मिनिमम और आर मैक्सिमम निकाल सकते हो. सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर कैलकुलेटिंग आर मिनिमम एंड आर मैक्सिमम. So now my energy E in at up new, कहीं भी आप जनरल लेवल पर इस तरह से कुछ होगा, देखते हैं क्या आता है. So E is equal to half m r dot square plus j square upon 2m r square minus 2e square 4 pi epsilon naught r. न्यू एनर्जी इसको मिल जाएगी. वो न्यू एनर्जी कितनी होगी? -3e square upon 8 pi epsilon naught r naught, and this will be fixed. अब जैसे ही नया ऑर्बिट में गया तो वो फिक्स हो गया एनर्जी. So now you can see how you can change the energy without changing angular momentum, isn't it? There are n number of different way, but this is one of the very interesting way that if you are changing something very fast, then it is just going to change. The energy is just going to change. Yes. And now just you can put it, and how you can get value of r is equal to, कैसे मिलेगा आपको r की वैल्यू, r minimum r maximum? So at r is equal to r minimum and r maximum, what is going to happen? r dot is equal to 0. कल की क्लास में किया था हम लोगों ने, है ना? So this value is -3 square upon 8 pi epsilon naught r naught. This value is going to 0. j square की वैल्यू फिर से आप पुट करोगे. क्या था j square का वैल्यू? m e square r naught by 2m 4 pi epsilon naught r naught square minus 2e square 4 pi epsilon naught r naught. और आप इंटरेस्टिंगली देखोगे कि ऑल इक्वेशन बेसिकली, सॉरी नॉट आर नॉट, हियर इज आर स्क्वायर एंड हियर इज आर, सॉरी. एंड नाउ यू विल फाइंड द होल इक्वेशन इज समथिंग लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? आप सबसे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट कैंसिल कर सकते हो, ई स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो. सो ऊपर में क्या आएगा? -3 अपॉन आर नॉट must be equal to r naught by r square, and here is -4 upon r. यही होगा ना? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया.
नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन. इसको सॉल्व कर सकते हो. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर स्क्वायर, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट यू विल गेट r इज इक्वल टू, क्या आ रहा है वैल्यू, जस्ट चेक करके बताओ. लेट मी चेक, मेरे पास तो है r0 by 3 and r0. So this is your r minimum, this is your r maximum. ठीक है. एवरीवन कंफर्टेबल. अब इसी में से कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है, डोंट वरी, कोई भी पॉइंट. बट लुक एट, if you know one parameter, and what is that parameter? Nature of potential and distance, some initial thing, you can calculate each and everything, isn't it? And this is all this is a very beautiful example of orbit maneuvering, satellite maneuvering. एक लेवल से दूसरे लेवल पर ले जाने के लिए कैसे कैसे काम करते हैं. ऑब्वियसली दिस इज थियोरेटिकल, दिस इज वेरी ट्रिवियल काइंड ऑफ थिंग. इसके अलावा बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इसमें यूज होता है एज ए टेक्निकल लेवल. ओके, ठीक है. सो एक प्रॉब्लम और करते हैं और फिर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी सारी चीज करने की कोशिश करो, एंड देन सेंड मी डाउट. और मैं आपको कुछ वीडियो भी पोस्ट करूंगा प्रीवियस ईयर के, सो आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो. फिर हम लोग एक डाउट सेशन भी ले सकते हैं. ठीक है. ओके सर. एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं फिर चलते हैं. ठीक है, वेरी सिंपल, जस्ट 1 मिनट में हो जाने वाला प्रॉब्लम है. सो 2 पार्टिकल ऑफ सेम मास, one is moving in a circular orbit and another is moving in some parabolic orbit. Okay, and the radius of circular orbit is r0, and the minimum, so you can say this will be r minimum. The minimum distance for the parabolic orbit is, and all r is greater than this one, isn't it, is rp. So you have to calculate the ratio between r0 by rp, and all other parameters are same. The angular momentum is same, they are interacting with same kind of potential, same mass is there, everything is same. How you will approach it? Very simple. And ये क्वेश्चन गोल्डस्टीन के क्वेश्चंस है ना, unsolved question है. Very simple but very insightful. What will be equation of orbit? L by r is equal to 1 plus e cos theta. Yes or no? And what will happen for circular orbit? E equals to 0. E is equal to 0. So L upon r0 is equal to 1, and L, and what is L? J square upon mk. So L will be same for both orbits. So this is for circular. And what will be for parabolic orbit? क्या होगा? L by r is equal to, eccentricity की वैल्यू क्या होगी? 1 cos theta. Now what will happen at r is equal to rp? rp की वैल्यू, r की वैल्यू rp होगी तो क्या होगा? If it is minimum, then cos theta must be maximum. maximum. And what is maximum value of cos theta? Is 1 into 1. So that is 2. So you have L upon, sorry, rp is equal to, क्या आ रहा है? r0 is equal to L and rp is equal to L by 2. So you can easily calculate the ratio. ठीक है? So now you can see, you can easily use orbit and all kind equation of orbit, the concept of eccentricity, and all this type of situation. Okay? And always whenever you will have a, mainly कहीं भी आप फंसो तो 2 चीज का हमेशा यूज कर सकते हो. One is conservation of angular momentum, another is conservation of energy. 2 पॉइंट को ले लो,
you can use conservation of angular momentum, you can use conservation of energy, but which point was the most important? किस पॉइंट पर लेने से आपका काम आसान होगा, बता सकते हो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे यूज करते हैं? एक पॉइंट पर लेते हैं टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, दूसरे पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लेते हैं. सो किस पॉइंट पर लेने से बेटर होगा आपको? आर मिनिमम आर मिनिमम और आर मैक्सिमम. क्यों? क्योंकि वहां पर आर डॉट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाता है. तो आप एक पैरामीटर का इजिली यूज कर सकते हो, है ना? यस सर. ठीक है. सो जस्ट ट्राई टू डू दिस थिंग. और मैं आपका टाइम कुछ दूसरे ढंग से भी सेव करूंगा कि स्क्रीन टाइम आपकी थोड़ी कम हो जाए. सो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो. जो जो क्वेश्चन इसमें टफ क्वेश्चन है, आई विल जस्ट पोस्ट द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस. ठीक है? ठीक है सर. है ना? बिकॉज थोड़ा सा हमें स्क्रीन टाइम कम करना होगा और सीखने पर ज्यादा लगाएं. और प्रीवियस ईयर तो कहीं ना कहीं आपको ही सॉल्व करना चाहिए. ठीक है? एंड नाउ यू कैन अप्रोच इट. जो भी प्रॉब्लम हो, यू कैन सेंड मैसेज टू मी. I will try to give either, if it will be very simple, then I will give you the simple solution, or if it will be really insightful. I have seen that 3 and 4 question is really insightful, so I will give the video solution of this. Okay? Yes, sir. Okay. Okay, sir. Chalo. So more or less we have finished this topic. Next week I will start moment of inertia tensor, rotational, and all this thing. And then this topic is also useful for JAM exam as well as NET examination. ठीक है? दोनों के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा. ओके? चलो, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir.